हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कंट्रोल्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ परफेक्ट गैस। ऑप्शन है यहाँ पर प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज अप्लीकेबल फॉर द बिहेवियर ऑफ अ परफेक्ट गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज अप्लीकेबल फॉर द बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस। ऑप्शंस आर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलूसियस लॉ, ऑल ऑफ द अबव एंड जूल्स लॉ। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन एसआई यूनिट्स इज सेंटीग्रेड, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड रैंकाइन। आपको बताना है यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट्स की बात करते हैं टेम्परेचर की, तो आंसर इज डी, दैट इज योर कैल्विन। किस में नापते हैं हम लोग? कैल्विन में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ मास इन एसआई यूनिट्स। द यूनिट ऑफ मास इन एसआई यूनिट। ऑप्शन आर किलोग्राम, ग्राम, टन, क्विंटल एंड न्यूटन। द राइट आंसर इज किलोग्राम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the unit of time in SI. The unit of time in SI units is second, minute, hour, day, year. The right answer is A, second. The next question, the unit of length in SI units is, बात करते हैं पर्टिकुलर, the unit of length in SI units is मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर. The right answer is 1.6 का A, that is meter. The next question, the unit of energy in SI units is watt, joule, joule per second, joule per m, joule m. The right answer is 1.7 का B, that is joule. The next question is, according to the Chau's law for a perfect gas, जहाँ पे आप देखेंगे P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, T फॉर टेम्परेचर, M फॉर मास, R फॉर गैस कांस्टेंट, J फॉर जूल कोफिशिएंट, CP फॉर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, CV फॉर स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम. देन नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ फॉर अ पर, व्हाट इज द राइट आंसर? 1.18 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चार्ल्स लॉ की बात करेंगे यहाँ पर, तो प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट एंड T2 अपॉन T1 इजकल टू V2 अपॉन V1. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द गेलूसियस लॉ फॉर अ परफेक्ट गैस द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ अ गिवन मास वेरीज डायरेक्टली एज। द राइट आंसर इज 1.9 का सी, दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट. According to the Gay-Lussac law for a perfect gas, the absolute temperature of a given mass directly as a absolute temperature if the volume is kept constant. The next question is, an ideal gas as compared to a real gas. An ideal gas as compared to a real gas at a very high pressure occupies. The right answer is, the right answer is from 1.9 is C, that is absolute temperature if volume is kept constant. According to Gay-Lussac's law for perfect gas, the absolute pressure of given mass varies directly to the absolute temperature if volume is kept constant. The next question is, an ideal gas as compared to a real gas at very high pressure occupies. An ideal gas as compared to a real gas at a very high pressure occupies more volume, less volume, same volume, unpredictable behavior, and no such correlation. The right answer is more volume. An ideal gas as compared to a real gas at a very high pressure occupies more volume. The next question is, general gas equation is PV बराबर MRT. जनरल गैस इक्वेशन is PV बराबर MRT. Next question. Question is says that gay gas laws are applicable to.
First option, gases as well as vapor, gases alone and not to vapors, gases and steam, gases and vapors under certain conditions, steam and vapor. The right answer is B, that is gases alone and not to vapor. The next question is, according to the Dalton's law, the total pressure of the mixture of gases is equal to. The right answer is 1.13 का C. According to Dalton's law, the total pressure of the mixture of gases is equal to sum of the partial pressure of all. क्या होगा? Sum of the partial pressure of all. The next question is, which of the following can be regarded as gas so that gas laws could be applicable within the commonly encountered temperature limits? Options are O2 N2 steam CO2, O2 N2 water vapor, SO2 NH3 CO2 moisture, O2 N2 S2 air, steam vapors H2 CO2. The right answer is 1.14 का D, that is your O2 N2 H2 air. The next is the unit of pressure. The unit of pressure in SI units is. The unit of pressure in SI units is kg per centimeter square, mm of water column, pascals, dynes per square centimeter, and bars. The right answer is C, that is Pascal. The next question is, if in a polytropic process, the perfect gas equation is. In a polytropic process, the perfect gas आप इक्वेशन दे सकते हैं P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. Options are, one property at one of the states provided all other properties are known. Second, to relate the end states of the process, and C is the intermediate properties during the process. The right answer is A, that is one property at one of the states provided all other properties are known. The next question is, temperature of a gas is produced due to. Temperature of a gas is produced due to. Options are its heating value, kinetic energy of molecules, repulsion of molecules, attraction of molecules, surface tension of molecules. The right answer is 1.18 ka B, that is kinetic energy of molecules. The next question is, according to the kinetic theory of gases, the absolute zero temperature is attained when. Options are, volume of the gas is 0, pressure of the gas is 0, and kinetic energy of the molecules is 0, specific heat of a gas is 0, and mass of the 0. The right answer is 1.19 ka C, that is kinetic energy of the molecules is 0. The next question is, kinetic theory of gases assume that the collision between the molecules are perfectly elastic, perfectly inelastic, perfectly elastic, perfectly inelastic, and perfectly elastic and partially inelastic. Perfectly ऑप्शन पहला था perfectly elastic, second option perfectly inelastic, फिर partially elastic, partially inelastic, and partially elastic and partially inelastic. The right answer is perfectly elastic. Kinetic theory of gases assume that the collision between the molecules are perfectly elastic. The next question is, the pressure of a gas in terms of its mean kinetic energy per unit volume E is equal to the. यहाँ पर बात करते हैं परफेक्टली जो प्रेशर ऑफ द गैस है इन टर्म्स ऑफ मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम E इज इक्वल टू. तो राइट आंसर यहाँ पे होगा इज D, that is 2E upon 3. And the next question is, kinetic energy of the molecules in terms of absolute temperature is proportional to. The right answer is 122 का A, that is T. Kinetic energy of the molecules in terms of absolute temperature is proportional to T. The next question is,
Superheated vapors behave. Superheated vapor behave. The right answer is D. That is your approximately. That question is absolute zero pressure will occur. Absolute zero pressure will occur. The right answer is C. That is when molecular momentum of the system becomes zero. Absolute zero pressure will occur when molecular momentum of the system becomes zero. Next question. No liquid can exist as liquid at. Options are minus 273 डिग्री Kelvin, वैक्यूम, जीरो प्रेशर, सेंटर ऑफ द अर्थ इन स्पेस. बात यहाँ पे की जा रही है नो लिक्विड कैन एग्जिस्ट एज लिक्विड एट. तो ये सही आंसर होगा इसका सी, जीरो प्रेशर पर, यानी नो लिक्विड कैन बी एग्जिस्ट एट एज अ लिक्विड एट जीरो प्रेशर. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग.